the Red Sun. Ladies and gentlemen, my name is Gunjan Utreja. I'm going to be the host. और आज हमारी जिम्मेदारी है, सर प्लीज काम डाउन हो जाइए, बैठ जाइए प्लीज. देखिए घबराने की कोई बात नहीं है, because India's top law enforcement agency, the Special Investigative Unit is here and they have secured this premises. So घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. Please calm down. Guys, please शांत रहिए. Thank you. Hello. Yeah. Okay. You sure? Okay. Well done. ठीक है. Cool. Yeah, it's in front of me. मेरे सामने. Super. Perfect. Okay, ladies and gentlemen, there's a good news. देखिए लॉकडाउन है, कोई बाहर जा नहीं सकता, कोई बाहर से अंदर आ नहीं सकता. लेकिन क्या मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं, अपने एटीएम एक बार देख लीजिए, क्योंकि आप सबके बीच में ही कोई एक बहरूपिया बैठा हुआ. वो इस वक्त एक बिल्डिंग, इसी बिल्डिंग में है, मैं बता रहा हूं आपको. कोई देख रहा है, कोई प्लानिंग कर रहा है इसे चुराने की. But can I tell you, घबराने की जरूरत नहीं. Because ladies and gentlemen, हमारे बीच मौजूद है एक ऐसा जांबाज ऑफिसर जो सिर्फ केस सॉल्व ही नहीं करता, वो गेम शुरू होने से पहले खत्म कर देता है. प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर, क्योंकि हम सबको बचाने, इस जूल को बचाने इस म्यूजियम में आ गया है इंडियाज बेस्ट, इंडियाज ब्रेवेस्ट विक्रम पटेल. Welcome Inspector Vikram Patel. Good evening and relax everyone, क्योंकि we've got everything under control right now. हमारे सूत्रों के अनुसार एक जूल थीफ है जो रेड सन को चुराने की कोशिश करना चाहता है, लेकिन अफसोस वो ऐसा कर नहीं पाएगा क्योंकि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ. और जैसा मैंने कहा कि आप सब बहुत सेफ हैं और रेड सन भी. Okay, we've got him. All units, let's go. गलत बोल गया तो गेम ओवर नहीं, ये गेम तो बस शुरू हो रहा है. एक गेम चोर पुलिस का, एक गेम हाइड एंड सीक, एक गेम रेड सन की चोरी का. My game, my rules, my victory. क्योंकि राजन औलख ने कभी हारना सीखा ही नहीं. आप सब इस जूल को एक आखिरी बार देख लीजिए, क्योंकि अब ये जूल गायब होने वाला है. Shall we? Hack detected. Hack detected. It's done. आप सुबह काम करोगे मेरा. जब विक्रम आए तो उसे बता देना, एक मैसेज दे देना, गेम ओवर. ले लो रेड सन. ये क्या हुआ? सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंगली था. Is there something wrong?
Warning. Warning. क्या सोचा था मिस्टर ऑलोक इतना आसान होगा? गेम भी तेरा, रूल्स भी तेरे, पर जीत नहीं, वो तेरी नहीं होगी, क्योंकि इस जूल को चुराना बच्चों का खेल नहीं, इसे सिर्फ असली जूल थीफ चुरा सकता है। Ladies and gentlemen, एक बार जोरदार तालियां! Come on, everybody! Woo! Let's have a big round of applause. सर चोर तो इकट्ठे हो गए, अब उनको भी बुला लेते हैं जिन्होंने इस पूरी चोरी की मास्टरमाइंड करी है। बुला लें उनको? Yes, please बुलाइए। Okay, ladies and gentlemen, please put your hands together as I invite on stage Director Original Films at Netflix India, Ruchika Kapoor Sheikh, and joining her on stage is the mastermind behind Jewel Thief and some of India's biggest blockbusters, making his grand OTT debut, the one and only Mr. Siddharth Anand. Woo! वेलकम। चलिए, चोर भी इकट्ठे हो गए, मास्टरमाइंड भी इकट्ठे हो गए, कुछ लोग रह गए हैं। एक सेकंड कुणाल सर, मैंने वो हीरा और इन चोरों को स्टेज पे थोड़ा सा बिजी कर रखा है, आप भी आ जाइए प्लीज जल्दी से। कुणाल सर आ जाइए प्लीज। Here we go, ladies and gentlemen, a big round of applause. तो चलिए आगे बढ़ते हैं सर। ऑफ कोर्स ओके सर, मैं कह रहा था सबसे पहले तो आपको ढेरों शुभकामनाएं, बट मैं कह रहा था कि जनता काफी उत्सुक है, एक्साइटेड है, सो शुड वी गो है? आपकी इजाजत होनी चाहिए। यू आर द डायरेक्टर, कॉल फॉर इट प्लीज। I'm actually the producer, but I call the shots here. So let's see the trailer, guys. ऐसे नहीं सर, ऐसे नहीं होगा। आपकी पिक्चर है, खर्चा काफी किया गया है, स्टाइल और अंदाज में होगा। देखिए वॉल्ट ऐसे खुलेगा नहीं सर, एक कोड के जरिए खुलेगा, और वो कोड जो है वो सिर्फ आपके ही हुक्म से आ सकता है। तो बुलाओ उसको और कोड डाला जाए। Can we have the code please? Okay, I guess we have the code, sir. The code is the release date, 25/04/25. 25. Okay. 25/04/25. तो चेक कर लेते हैं कि क्या ये सही कोड है कि 250425। मुझे ऐसा लग रहा है स्टेज पर बहुत धमाका होने वाला है, आतिशबाजी होने वाली है। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा पीछे आ जाएं। लेट्स गो बैक स्टेज एंड एंजॉय दिस वन। ऑलराइट, हियर वी गो।
का ट्रेलर? Very nice, fantastic. Okay, let's have a big round of applause for them. I'm going to humbly request you to please wait backstage as I'm going to invite you back in some time. I'm going to request you to please wait backstage. I'm going to invite you back. Ladies and gentlemen, कैसा लगा आपको ट्रेलर? एक बार जोरदार तालियों से बता दीजिए. Well, thrill, action, deception, misdirection, mind-bending, blasting, total कमाल होने वाला है. On your screens, don't forget to add this Jewel Thief onto your must-watch list when it finally drops on 25th of April exclusively on Netflix. और ladies and gentlemen, मैं आपको बताऊं, असली मैजिक जो है वो पर्दे के पीछे होता है. और अब इस मंच पर मैं बुलाना चाहूंगा to give us a glimpse into the passion, planning and powerhouse creativity that brought it all together. Please welcome the director of original films at Netflix India, Ruchika Kapoor Sheikh, to share a few words. So good to see you. All yours, man. थैंक यू. इतने धमाकेदार ट्रेलर के बाद एक छोटी सी स्पीच तो बनती है. ट्रेलर ज्यादा धमाकेदार होगा, स्पीच धमाकेदार शायद नहीं, लेकिन इम्पोर्टेंट जरूर. बिकॉज आई एम हियर टू टॉक अबाउट ऑल द इनक्रेडिबल पीपल बिहाइंड दिस फिल्म. फर्स्टली अ लिटिल बिट अबाउट अस एट नेटफ्लिक्स. नेटफ्लिक्स पर हमारा बस एक ही मकसद है, टू टेल स्टोरीज दैट आर इमोशनल, एंगेजिंग एंड एंटरटेनिंग. कुछ कहानियाँ आपको हंसाएगी, कुछ आपको रुलाएगी, and some will have thrill. Thrill से याद आया, I'm here to talk about the most thrilling heist action adventure film of the year, Jewel Thief, and the man who made it possible, Siddharth Anand, as a producer, putting together this film at such scale with a relentlessness in its narrative and lots of twists and turns. Starring a formidable cast like Jaydeep Palhawat. Boy, he really knows how to play bad. From जाने जा to महाराज, हमने डिसाइड किया है हम आपको जयदीप पल्हावत के सारे रंग और रूप सिर्फ नेटफ्लिक्स पे दिखाएंगे. Moving to Kunal Kapoor, who brings his A game as the cop, who's incessantly quick on the heels of this Jewel Thief. He brings his signature presence and charm to his role with so much effortless ease. Nikita Datta, who adds so much gravitas, innocence and a silent depth to the film. And finally, the Nawab turned thief, Saif Ali Khan. What is this film without him? Basically, it's all your cheers. Finally, Mamta Anand, who is the 1 a.m., 2 a.m., 3 a.m. backbone and anchor of this film. See, there's so much validation backstage. She's not here with us today because, much like other days, she's working backstage. But thank you so much for giving the trailer so much love. And we're hoping when this drops on the 25th of April, you give Jewel Thief a special place in your houses and in your hearts. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you very much. Well, ladies and gentlemen, we're super excited to witness this grand streaming debut powered by Siddharth Anand's vision and Mamta Anand's powerhouse production house, Marflix. With that, let me invite Mr. Siddharth Anand back on stage. Let's give him a big round of applause. Sir, कैसे हैं आप? Sir, बहुत लोग हैं. Everybody is excited. I just wanted to ask you, romance, war, espionage, and now this genre. What excites you about a story? What is the common thread between all the genres which excites you about making a film? Common thread, I think, is entertainment. I think there are so many people here. It's my endeavor is to make films that you can watch as a community together and enjoy it. सीटी बजाओ, ताली बजाओ, हंसो, थोड़ा सा रो भी लो. ये पिक्चर अच्छी है. सर मैं कह रहा था थोड़ा सा आगे आ जाते हैं. While we just set up, and of course, the audience has given you so much love for all the films you've created. We're really looking forward to this super streaming debut. And even though I wanted to ask, और सिद्धार्थ सर मैं कह रहा था कि चोरी इतनी बड़ी है कि एक नहीं दो डायरेक्टर लगे आपको पुल ऑफ करने के लिए. Ladies and gentlemen, give it up for Cookie Gulati and Robbie Grewal. Can I request एक बार जोरदार तालियां हमारे दोनों डायरेक्टर्स के लिए. Next up, from TV to films to series, she's left a mark on audiences throughout her characters like Suman Tanu, and now we're going to see her as Farah.
in Jewel Thief. Give it up for Nikita Datta. Please, बैठिए sir, please. All yours. Of course, we've seen him in Rang De Basanti, Jogi Bachna Hasino, the captain in gold, someone clearly who you can rely on for support. Give it up for the dashing Vikram Patel, aka Kunal Kapoor. And now, ladies and gentlemen, the man of many faces and unforgettable personas, from Jane Jam, Maharaj, Ajib Dastan and many more. Ladies and gentlemen, इनके किरदार हमारे जहन में रह जाते हैं जब पर्दा काला भी रहता है. Give it up for जयदीप अलावा. And now, ladies and gentlemen, give it up for the uber cool, the Nawab of swag. Give it up for Saif Ali Khan. May I request you to please take your seats? Finally, sir, मिल गया सर. कुणाल सर, रंगे हाथों पकड़ा गया. इसे सही जगह छुपा के रखा था, किसी को नहीं मिलेगा. Many jewels up there. No wonder everybody's been searching. How have you been? First up, congratulations one more time. The trailer looks spectacular. सर मैं देख रहा था पिक्चर. देखिए हर इस तरह की फिल्म में पता नहीं लग रहा था किरदार क्या करे. तो यहाँ पे चोरी पकड़ रहे हैं कि चोरी कर रहे हैं कि डबल क्रॉस कर रहे हैं, थोड़ा सा बताइए ना कि क्या कर रहे हैं. देखिए, in a heist film like this, the lines between hero, anti-hero, mastermind, they often blur, you know. तो सर यही तो पूछो कि मतलब अब आप बता दीजिए. मैं कह रहा हूँ 25 तारीख का क्या वेट करना सर, बता दीजिए सर प्लीज. If you could share more about your character, what else is happening? What is the lovely thing about a script like this? I mean, what I like about a heist movie is the guy does something technically wrong. I mean, he breaks the law, but he does it for a good reason, usually to help someone in his family, and that kind of, it's an honorable kind of theft. So it makes it a very exciting kind of character. He's got skills that are of the criminal type. And I think people enjoy watching people breaking the law in a movie like this. It gives them a chance to kind of take on the system. And I think that's what heist films are about. And it's got a tremendous kind of strong anti-hero antagonist in Jaideep. So it was a lovely part for me. Fantastic. You know, I saw the trailer. Jaideep, आप इतने कमाल के unforgettable किरदार करते हैं. जब भी कुछ करते हैं उसमें अपना कुछ नया पर लेके आते हैं. When we saw this, थोड़ा कंफ्यूजन सा हो रहा है कि आप चोरी करवा रहे हो, कर रहे हो कि क्या है. सो थोड़ा सा आप भी बताएं अपने किरदार के बारे में प्लीज. तो देख लो, रेड से नहीं लग रहा, इतना कैरेक्टर में वास कर. बट आप क्यों जानना चाहते हैं? आपको फिल्म नहीं देखनी है? सर मेरे पास सब्सक्रिप्शन जो है ना वो पासवर्ड चेंज कर दिया मेरे दोस्त ने. नहीं देखिए, ये जैसे सर ने कहा कि हास्ट फिल्म्स में हमेशा बहुत सारे ट्विस्ट टर्न्स होते हैं और किसी को नहीं पता है कौन क्या गेम खेल रहा है. एज सर सेड कि नोबडी नोस, हमेशा ब्लफ होगा, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होगा. किरदार बदलेंगे, उनकी हरकतें बदलेंगी तो कुछ नया ट्विस्ट आएगा. तो आई एम श्योर आपको बहुत सारे नए ट्विस्ट देखने को मिलेंगे. अब ये नहीं बताऊंगा कि मैं चोरी करवा रहा हूँ या कर रहा हूँ, वो आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा. चलिए सिद्धार्थ सर, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि कितने की चोरी लगती है सर कि इतनी शानदार कास्ट इकट्ठी करनी पड़े. मतलब पिक्चर में नहीं, मतलब इन रियल लाइफ कितने की चोरी करनी पड़ती है कि इतने शानदार स्टार्स आते हैं. मुझे नेटफ्लिक्स में जाके बहुत बड़ी चोरी करनी पड़ी थी इसके लिए, और मैं बता नहीं सकता हूँ क्या है, बट बहुत मेहनत लगी, बहुत स्किल लगा इसके लिए. So I wanted to know because it's your OTT debut and of course this is great partnership between you and Netflix. Could you share more about it, sir? I think it's a great fit for Netflix's film. The fact that it will आपको भी Netflix का सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है या आपको फ्री मिल रहा है? नहीं, मुझे भी देना पड़ता है. आपको देना पड़ता है.
I was 400. मैं तो It's lesser. He's more He expensive. gets a discount? I get a discount. You know? As the Actually, even I pay more. It's not the number. I pay more. Value. Yeah. नहीं वैल्यू है पूरी है वो तो मेरे को लगा था कि अब तक तो जयदीप जी और सैफ को तो अकाउंट परमानेंटली फ्री दे दिया होगा नहीं ऐसा No amazing. फिर ठीक है फिर Everybody pays. everybody pays then it's fine so I just Some people pay less. I mean, just we are paying a little more. But Saif sir, you know, I just want to check with you, you know, because you, as I said, you've been ahead of the curve. Could you share with us when you see things around? What are the Gen Z trends which you think will now? Also, you know, your earlier question. If a friend owns a restaurant, you know, I don't like going there for free meals. I think friends should pay. You know, and I don't like taking advantage of things like that. So. मैं कल से तेरे साथ पासवर्ड शेयर नहीं करूँगा अपना बस. What about Gen Z? So I wanted to know. I just wanted to know. You know, you've got young kids. क्या ट्रेंड चल रहा है सर? कुछ है अंदाजा कि क्या हो रहा है Gen Z की दुनिया में? नहीं, I don't know. You know, hopefully the makers know. Hopefully the platform knows. We're actors. When we get an offer, hopefully it comes from a space where people have done a little thinking about what kind of films they should be made. And we're lucky, we get lots of different types of offers. And hopefully the offer is based on some kind of knowledge. Fair enough. I think producers should know this, even more than actors. And yeah, I mean, I am in touch with, but it's very difficult to predict trends. I think if you follow yourself, right, if you do something you really believe, I'll tell you about clothes, for example. I feel I've had a sense of fashion because it's what I believe in my heart. So I think if you strongly feel something, then chances are people will agree with you. But if you try and imagine what somebody else would want, you'll fail because it's impossible to do that. But since we're all quite similar, if you really try and please yourself, and hopefully a lot of people will agree with you. Does that answer your? It does, sir. It does. And I have to, you know, because you spoke about fashion, I think you've been very timeless. And even in that, you've been ahead of the curve, I must say that. सिद्धार्थ सर, आपसे पूछा था कि आप तो सैफ सर के साथ काफ़ी समय से काम करते हैं. तारा रामबम, सलाम नमस्ते. You know, and now, has anything changed in him? Be honest. He's It's not the first time we've been asked this question, so we're. but I want to give an insight. He's grown wider and taller. Yeah, those are the only two adjectives. Emotionally or? Physically. Physically, as you can see. ठीक है. हाँ. नहीं और भी कुछ चीजें बताएं सर. Grown inches. Same है यार. I think he is lovable. He is somebody who's a darling on set. He makes everybody comfortable. And I'm glad कि जो भी change हुआ ये quality change नहीं हुई है. He makes everybody really comfortable. Eases out everybody. Sometimes his jokes scare some people. His sense of humor is such. But he's amazing, and that's something that he shouldn't change. So and you said not much has changed. Can I humbly ask you, what is that one thing you would like to change in him? Should I say it? That he should be on time. सर आज तो सबसे पहले आए हो थे. No, Tell us. I think he has changed it, if I may. I mean, he was mostly. Which shooting day he changed? Huh? Because I am. You're on time. That's what I'm saying. He's kind of changed. Maybe let us have control the thing, not the time, but he actually was mostly on time. Really, I have to give it. Be honest on stage. Thank you. एडिट कर देना ये वाला. Bless you all, my children. These children, please stand up in the crowd. No, they are. नहीं Oh, oh, दो बच्चे हैं. कंट्रोल. All cheerers, pick up your checks outside. आपने चेक की बात करी, 3 ये भी खड़े हो गए. Okay, well, let's move. Ruchika, I wanted to ask you, you know, Netflix has been home to films which often spark cultural conversations. And of course, it resonates deeply with the audiences as well. So, what makes a film stand out and, you know, becomes a part of pop culture? Could you share?
Your insight on that? You know, नहीं सर, हमारा इतना बजट था नहीं ये मैं नहीं मानता सर, मैं मानता नहीं सर, मैं मानता नहीं सर। मैं मानता हूँ कि वो AI है। हमारा बजट नहीं था इतना। नहीं देखो मतलब जेन्युइनली बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया हमने इनको बोला जो आपको आता है आप कर लीजिए। कोरियोग्राफर ने भी कुछ नहीं किया। बट जैसे हम दिन में बात कर रहे थे सर कह रहे थे पता नहीं लोगों को ऐसा क्यों सरप्राइज लगता है कोई नाच सकता है। Which was not I mean जो लोग मुझे बचपन से जाते मैं अपना बैकग्राउंड हरियाणा है, बहुत घुड़चुड़ियों में नाचा हूँ। तो डांसिंग इज जयदीप सर एक बात बताऊँ? इज ओके। इट्स नहीं अगेन शाजिया एंड पीयूष शाजिया just made our job easy, that's it. I'll actually tell you, जब हम ये गाना शूट कर रहे थे, तो what happens is whenever whichever actor has to go and dance, बाकी सब तब रेस्ट कर रहे होते हैं, काफी टाइम वैन में चले जाते हैं। जब जयदीप सर कैमरा के सामने जाने वाले थे डांस करने के लिए, he had an audience. हम सब ऐसे बैठकर देख रहे थे कि जयदीप is going to dance. We need to see this. सब उनके पहले शॉट के लिए वेट कर रहे थे। पता है वो क्या रहा था, सब बैठे थे कि देखते आप क्या करता है। मैं आपको नहीं याद करता नहीं, मैं बताती हूँ। बट बहुत मजा आया क्योंकि साथ में रिहर्स भी कर रहे थे। जितना भी हमें वक्त मिला, टाइम मिला, मुझे लगता थोड़ा कम ही वक्त मिला उसके लिए। बट आई थिंक प्रवीण एक लड़का है जो उनकी टीम में है, उसने मुझे थैंक यू गाइस, शाजिया, पीयूष, प्रवीण, इट्स हैपेंड बिकॉज़ ऑफ यू गाइस, थैंक यू सो मच। मेरे इतने सारे ऐसे फैंस मेरे लिए चिल्ला रहे हो ना सर। नो नहीं गलत है। मैं इसकी अवमानना करता हूँ। You want him to see? You want him to see? क्या आप देखना चाहते हैं? ओके, 25 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पे देखिएगा। 25 को नेटफ्लिक्स पे। थैंक यू। बाकी का डांस आपको देखेगा एक्सक्लूसिवली ऑन नेटफ्लिक्स 25 अप्रैल को। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग सच अ सपोर्ट। लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। मैं लेकिन आपसे जानना चाह रहा था कि फिल्म में इतनी चोरी हो रही है, इन रियल लाइफ आप अपने इन 3 को स्टार्स से क्या चुराना चाहेंगी? Their real life personality. हाँ जी, रियल लाइफ पर्सनालिटी से। I think from Saif, I would like to steal his wit and his coolness. Yeah, big fan of that. From Jaideep, I would want to really steal his acting skills. Unbeatable, as any co-actor I've worked with. And with Kunal, I would actually want to steal his voice. I've always said I really like. In fact, right now when you were backstage and you started speaking, I looked at Jaideep and I said, "Oh my!" The experience of working with such incredible creators who've brought honesty, depth, and a whole lot of conviction to the film has really been the reason that we went ahead and did Jewel Thief. Of course, it helps that some really decent actors like Saif Ali Khan, Jaideep Alawat, Nikita Datta, and Kunal Kapoor are a part of it. I think it's the whole package. Talking about the package, I saw this package being delivered on a bike. The moment you made that entry and you said, यार घबराने की कोई बात नहीं है, सब सिक्योर्ड है। मैंने कहा यार अगर ट्रेलर ऐसा दिख रहा है तो पिक्चर में क्या धमाकेदार होगा। Could you share, something about your character and what excited you about this character for you to pick up this project? Well, I was looking to do a film like this. Like I've never done a heist film, which is a roller coaster ride, thriller, surprise after surprise. So I was looking to do something like that, and luckily I had a chance to do it with an amazing team. But for me, what was really exciting was the part. I get a chance to play a tough, ruthless cop. Usually, I'm always cast as the mediator, the peacemaker, the poet, the philosopher. And I mean, in usual circumstances, if I was cast in this film, I would probably be putting all of you all on the table and saying, let's just sort this out. Let's just divide the red sun and move on. That's the kind of parts I get. But here, I get a chance to not be the peacemaker. I get a chance to have a gun, a badge, and slam a few people around. And that was great fun for me. Fantastic. But सचिन तेरा मन में आया नहीं कि एक बार टेबल पे बिठा के कर ही लेते हैं, 3 हिस्से कर लेते हैं? वो मुझे लगता है सैफ सर की सैलरी के साथ करना चाहिए। Moving on.
के 3 हिस्से। चलिए वो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा तो आप उसका जवाब निकिता, first of congratulations for this fantastic project. If you could share with us, of course, when you are a part of this heist, so much is happening in every scene, the story is moving so forward, and so much is happening in every frame. Could you share with us what was your experience working with this fantastic crew, and what is the one thing you learned or you took back from this project? As you rightly mentioned, when a heist is happening, there is actually a lot happening even while you're shooting. So there were lots of times when I would actually get so lost because I would just be like, okay, what's going on? Why is it going here? What's happening basically with the scene? So I've had two very, very talented directors who've actually led me on with that. If you have to talk about taking back from this film, I mean, I've been a part of Sid Anand's world, which I feel is a huge thing because, I mean, I feel as an actor, especially as a female actress, I would say, when you start working, all these years I have been in the industry, I don't think I've actually lived that classic Bollywood heroine tag, which thanks to you and to Mamta, I have gotten this opportunity to play the classic Bollywood heroine, and I'm not saying just because you're going to see me dancing. It's just overall to get the heroine feeling, and I think I've gotten that from this film. So that's my personal takeaway from being a part of Sid Anand's world with this film. You spoke about the directors, sir. So much is happening, especially a genre like this where you were an ensemble cast. What was your approach to bring each character's arc alive and making sure that every character was really mysterious and entertaining for the audience? I think firstly thanks Netflix for having such an amazing event and for all of you to be here. आप सोच सकते हैं अगर इतना इवेंट अच्छा है लॉन्च करने के लिए तो पिक्चर में कितनी चीज़ें होगी. I think मुझे firstly for me for this film Siddharth Anand was the northern star. तो उन्हीं को फॉलो करके I've navigated this film. He brought me on जहाँ पे इतनी अच्छी स्क्रिप्ट पहले तो जहाँ पे इतने ट्विस्ट टर्न्स इतने उमदे कैरेक्टर्स जो आपको एक पता ही नहीं चलता कि ये पॉइंट पे क्या करेंगे, विच इज़ सो अमेजिंग. इतने अच्छे एक्टर्स, इतना बड़ा सेटअप. आई थिंक दैट फॉर मी दैट वाज अमेजिंग. और जो कैरेक्टर्स को बिल्ड किया, आई थिंक लेट रॉबी टेक दैट. So पहले तो I feel there's so many twists and turns. एक नहीं दो डायरेक्टर लगे बनाने. I mean, so you can imagine. I mean, but on a serious note, I think it was Sid's baby. In the beginning, he got the script to us, and his vision, and the script was with him for some time, and we got the chance and opportunity to actually put it on screen. And personally, for me, a heist genre was something I really wanted to do. It excites